Hi friends, a very good evening to all of you. So guys, today is 10th of October and I'm starting the course of heat transfer over here. Just hold on, let me confirm whether my audio video is clear and screen is properly visible. Just give me a moment, okay, and we will continue. So let me check. Just hold on. So there is a, actually there is a problem of audio, but in a day or two it will get rectified, okay. Just give me 1 or 2 days. So you, some of you might be aware, my own laptop is down, and I'm using a temporary laptop. So this laptop does not have that much stuff in it. So just give me 1 day or two, and things will be clear. I've got the lights, so I'll put some extra lights, so lighting will be good. Only audio problem is there. Acha, you are already aware. So my current batch on textbook has got converted into recorded videos. So the old recorded videos are being published. But here on YouTube, I'm putting a completely new course, which will be different in terms of the amount of practice questions, the level of practice questions, and especially the chapter of heat convection. Hi Chitranjan, how are you? So Chitranjan, beta, do let others also know about this heat transfer uh, course, and they can also attend these classes live. Acha, frankly speaking, see the previous course which you are watching as recorded form, that is also good. There is no problem in that. But the thing is that when I teach on some portal, so there is a restriction of number of hours that I have to complete the subject of heat transfer only in 50 or 55 hours. So I focus mainly on the topics which are exam oriented. As of now also, I will focus on exam oriented topics only. But yes, initially those topics of convection which have never been asked in GATE exam, I would skip those topics. So the derivations of the differential equations of convection, non-dimensionalization of those differential equations and generating the dimensionless terms, etc. So generally I would skip that part whenever I teach on some portal. But here, since this is our own channel, so we have full flexibility and we will cover each and every topic that is the part of syllabus. Every day we are going to spend around 45 to 70 minutes. So what you can do after the class, you can take a short break, quickly revise what you have done. So maybe you can spend 20 to 25 minutes. So on daily basis, you can give 2 hours to the subject, and remaining time you can consume to other subjects. You don't need to read heat transfer separately. Just study with me, revise. That would be all. And once the subject is over, give the complete revision to the subject, and then after 20 days again revise. So you will observe that the subject is very easy for competitive exams, and with this particular course you will be able to cover up GATE also, ESC also, BARC also, ISRO also. All exams will be covered here only. So chalo, why to waste time, let us quickly start. So please write down heat transfer. Please write down heat transfer. So can anyone tell me what is this subject all about? Anyone? What is this subject all about? Heat transfer. What is this subject all about? Anyone? So, acha. So as of now, I think there are only two people who are watching the video. Okay, that is fine, no problem at all. Whenever I'm doing this course, I'm doing a video. So obviously I will go live. But suppose you guys are not there. So in that case, I will not ask doubts. Okay? मतलब already I am aware what doubts are there, है ना? So I mean, even if I ask a question, so I will not give you time for answering that question. What I would say, press the pause button and answer the question. ऐसे मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है? When you guys are not watching live. But when you guys are watching live, then obviously I will give you time for answering the questions. हाँ मनीष, बेटा ये वाला जो कोर्स है ना, ये
AEJE स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बेटे। ये ना गेट और ESC स्टूडेंट्स के लिए है। तो जैसे आज आप लोगों के लिए क्लास स्टार्ट किया ना, गेट वालों का भी मैंने आज क्लास स्टार्ट कर दिया। तो AEJE के लिए ना ये क्लास करने की जरूरत नहीं है, टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। ये क्लास तब करनी है अगर गेट और ESC की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे को ना टाइफाइड हुआ पड़ा है, तो वो क्या हुआ कि इतने दिन हो गए थे ना, बुखार वगैरह चल रहा था। बुखार तो क्या मतलब, मैं ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल। सो वो धीरे-धीरे टाइफाइड में कन्वर्ट हो गया। सो इसलिए मैं 2 दिन से डाउन चल रहा हूँ। बट आप लोगों की क्लासेस में इतना टाइम हो गया था तो मैं और लेट नहीं करना चाहता था। सो एनीवन, एनी आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट? एनीवन? नो? ठीक है। So what we will do today, we are going to start the introduction chapter. And in introduction chapter, what we will do first, we will discuss some important terms. Like we will develop the definition of energy, thermal energy, temperature, and heat. See, we are talking of heat transfer, so we should know what is the definition of heat transfer, है ना? So today, first of all, we will discuss some important terms. Now, once you understand what is the definition of heat, the term heat you study in thermodynamics also. So what is the need of new subject? What is the need of this additional subject of heat transfer? What are the objectives of this subject? I hope मेरा बात समझ आया। हीट को आप कहाँ पे पढ़ते हो? आप थर्मोडायनेमिक्स में Q is equal to mc delta T कैलकुलेट करते हो। You calculate heat in thermodynamics also. So if it is sensible heating, rise in temperature, then mc delta T. If it is change of phase, then mass into latent heat, है ना? Then what is the need of this additional subject? What are the objectives of this subject? So we will study a topic, heat transfer versus thermodynamics. And in fact, this topic is very important because whatever question you are doing, whether it is a question of conduction, whether it is the question of thermal radiation, or it is a question of heat convection, these will be the objectives of that question. आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, यही आपके क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। और आज हम इन दो टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। Now, once we have understood these two topics, from tomorrow onwards, I will start discussing the definition of different modes of heat transfer. So tomorrow we will discuss what is the meaning of mode, what is the meaning of mechanism of heat transfer. So how many mechanisms of heat transfer are there? Hi Suman, how are you? सुमन बेटा, ये वाला जो क्लास है ना, ये गेट और ESC के लिए है बेटे। तो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग इस क्लास को अटेंड ना ही करें क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब गेट और ESC की तैयारी करनी है तब आप ये क्लास अटेंड कर लो। अभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी के लिए अपना AEJE एग्जाम पे ध्यान देने का। AEJE एग्जाम की क्लास सुबह चल रही है। अच्छा, so what we will do, we will start discussing the definition of conduction. So anyone, does anyone know what is the meaning of mode and what are the three modes of heat transfer? So conduction, convection, and thermal radiation. So tomorrow we will start discussing the definition of conduction. So we will see what is the meaning of heat conduction, what is Fourier's law associated with conduction. So Fourier's law was given after Joseph Baptiste Fourier, the same guy who developed the Fourier series. And what is thermal conductivity? Tomorrow's class and day after tomorrow's class, these two classes will be dedicated to definition of conduction, and actually you will get a question in one of the exams you are going to attend. मतलब आप ये जो दो क्लास करोगे ना, इनमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा किसी एक एग्जाम में। आप लोग गेट का एग्जाम दोगे, ESC का, बार का, ISRO का, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आएगा। Then after discussing the definition of convection, coefficient of convection, and Newton's law of cooling, we will also write down the definition of thermal radiation. So सुमन बेटा, सुबह 8 बजे होता है बेटा क्लास। बेटा ये जो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है, देखो इस पे, अगर इस चैनल पे जाओगे तो आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मिलेगा, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का भी और हीट ट्रांसफर का भी, गेट का भी। और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देन
After discussing all these definitions, we are going to talk about electrical analogy. This is a very useful concept. This is a very useful concept for solving the problems of heat transfer. In fact, the same concept you utilize for solving pipe networks also. So we will see what this concept is and how we are going to utilize it. And in the last of the chapter, I will talk about some beautiful applications of heat transfer. So generally I skip this part. जब किसी पोर्टल पे पढ़ाता हूँ तो जनरली मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ, ठीक है ना। मगर इस बार स्किप नहीं करेंगे, इस बार 40-45 मिनट्स एप्लीकेशंस पे लगाएंगे ताकि आप लोग मेस्मराइज हो जाएं कि हाँ यार ये सब्जेक्ट तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मैकेनिकल के बंदे ऐड कर दूंगा। हाँ पता है क्या, नहीं मैंने एक्चुअली ना सेपरेट टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं हुआ, बट आप सही कह रहे हो, मैं बनाऊंगा। Now, once we are done with the very first chapter of introduction, we will also talk about, we will move on to other chapters. Other chapters will be chapter of heat conduction. So there will be a dedicated chapter of heat conduction. So we will solve a lot of problems, different situations of heat conduction. Similarly, there will be a dedicated chapter of heat convection. There will be a dedicated chapter of thermal radiation. And in the last, there will be two chapters. One chapter will be heat exchanger and the other chapter will be boiling and condensation. Please note, for GATE exam, boiling and condensation is not required. You might get a question in other exams, but definitely not in GATE exam. Even in other exams, boiling and condensation is not so important. Okay? So this is going to be your first chapter. This will be your chapter 1. This is your chapter 1 and today we are going to focus on the first two topics. ठीक है, ये आपका chapter 1 है। अगर आप चाहो तो बाकी chapters के भी नाम लिख सकते हो। So बाकी chapters कौन कौन से होंगे? So there will be a chapter of heat conduction. There will be a chapter of heat conduction. Then after heat conduction, first we will go through thermal radiation because it is comparatively easy as compared to heat convection. And then we will discuss the chapter of convection. So thermal radiation, heat convection, thermal radiation, heat convection. कायदे से immediately after convection we should go for boiling and condensation because boiling and condensation are special cases of convection. But since boiling and condensation is not part of GATE syllabus, I will talk of heat exchanger first. And yes, from my previous recorded videos, आपको जो मेजर डिफरेंस मिलेगा वो मेजर डिफरेंस पता है कहाँ का होगा? एक तो हीट कन्वेक्शन में आएगा मेजर डिफरेंस, हीट एक्सचेंजर में आएगा मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, और बाकी चैप्टर्स में इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने लास्ट फ्यू मंथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। एक्चुअली मैं हीट ट्रांसफर को 2 सालों से इम्प्रूव करता आ रहा हूँ, मगर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं वो एक्स्ट्रा कंटेंट दिखा नहीं पाता हूँ, बट हाँ यहाँ पर मैं कंप्लीट कंटेंट पोस्ट करूंगा। And once the chapter of heat exchanger is done, so GATE people can leave the course, and those people who want to even want to cover up boiling and condensation, they can continue. So boiling and condensation छोटा topic होने वाला है, maybe in 2-3 classes, 3 classes at max we will be able to cover it, 3 or 4 classes, छोटी छोटी classes, ठीक है। These are your chapters. हाँ, मैं जैसे लाइव में ऐप पे डायरेक्ट आपका नाम लेकर नहीं बताता। अच्छा, नहीं, पता है वो रहने देना, क्योंकि पता नहीं यार, मतलब दे माइट नॉट लाइक इट, है ना। तो ऐसे ही किसी के साथ पंगा नहीं लेना, बट यस मैं टेलीग्राम चैनल बना दूंगा एंड यू गाइस कैन वी विल शेयर एवरीथिंग ओवर देयर। मैं नया टेलीग्राम चैनल बना लेता हूँ और सारी चीजें हम वहाँ पे शेयर कर लेंगे। वैसे आई एम अ फ्रीलांसर तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट क्योंकि मैं उनके साथ भी काम करता हूँ, सो व्हाई टू लाइक क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक? इंपॉर्टेंट टर्म्स। द फर्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो चित्रंजन एंड ऑल ऑफ यू गाइस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आपका पहला टॉपिक है।
important terms. I want to discuss four terms with you: energy, thermal energy, temperature, and heat transfer. So, first term that we are discussing is energy. So, who would let me know what is energy? सर आप इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हो, हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे? उसके दो रीजंस हैं, क्योंकि साउथ इंडियन स्टूडेंट भी मेरी क्लास अटेंड करता है ना, so those people will not be able to understand Hindi. And secondly, your paper is going to be in English, so we have to develop that habit of thinking in English. Not only we have to speak, not only we have to write, but we have to develop the habit of thinking in English. Then only when you will go to IITs for MTech and PhD program, and you will coordinate with foreign professors, you will be able to present your thoughts in a proper way, है ना? So अभी से हमें वो हैबिट डेवलप करना है, और मैं तो बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ, इजी वे में बोलता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. So guys, what is energy? What is energy? You can press the pause button and answer if you are not watching now. Anyone, what is energy? Anyone? Huh? So let me write the language which we learn in book. So I think we learn energy is the capacity to do work. है ना? We learn like this. Energy is the capacity to do work. This is the definition that we learn in books. So basically we say energy is some quantity with help of which we can move an object by applying force, और वी कैन कंप्रेस अ गैस. ऐसे ही बोलते हो ना, वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. सो एनर्जी इज सम सॉर्ट ऑफ क्वांटिटी with help of which you can do work. Basically you can apply force on a moving object, or you can compress a gas. But you know, there is a slight problem over here. Sir, what is that problem? There is a slight problem over here. What is that problem? In the books only, when you see the definition of work, so we say work is the transfer of energy. We say work is the transfer of energy. Work is the transfer of energy, by applying force on moving object. By applying force on moving object. आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ. By applying force on a moving object. On a moving object. So energy is capacity to do work, and work is transfer of energy. ठीक है? So I think there is some sort of loop over here. What they are saying, energy is the capacity to do work, and work is transfer of energy. So what they have done, they have made us go through a loop. तो उन्होंने loop में हमें घुमा दिया है, and they have not given us a proper definition of anything. सही बात है ना? Energy is work and work is energy. So there is no proper definition of any of these two terms. So from now onwards, you are not going to use this definition. ठीक है? This is more like school की definition है ये college students की definition नहीं है. So आप बोलोगे, so sir, what is the proper definition of energy? देखो ऐसा है, energy is actually even now a not completely understood concept. Say for example, earlier what we would think, that whenever there is matter, so in the matter there will be some energy. Vacuum means nothing, so there will be no energy in vacuum, है ना? Vacuum means no matter, so there will be no energy in vacuum. This was our earlier concept, that energy is stored in matter only. But I think in the end of 18th century or beginning of 19th century, when Nikola Tesla introduced the concept of zero point energy, everyone called him a madman. So zero point energy says, this concept says that the energy of vacuum is gazillion times the energy of mass. So what is the energy of mass? E is equal to mc square.
So energy of vacuum is much, much, much greater than the energy of mass. And you know what? If you have this much vacuum, like almost the volume of a cup, teacup. So if you have this much vacuum and you extract the energy of this vacuum, you can boil the entire water on earth. So our ideas of energy are continuously changing. So even till now, we do not have the final definition of energy. We keep on improving the definition of energy. So sir, what definition we are going to use? So what we will do, we will write the energy like this. So we will simply say energy is capacity to bring a change. Energy is capacity to bring a change. Write down the definition first, then I will explain. Energy is capacity to bring a change. Capacity to bring a change. To bring a change. Bring a change. And during this change, and during this change, during this change, the energy undergoes a transfer or transformation. During this change, energy undergoes transfer or transformation. Energy undergoes ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लो पहले. अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो आप पॉज बटन भी यूज कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर लाइव वीडियो देख रहे हो तो मैं वैसे स्लो ही लिखता हूँ और बीच बीच में टाइम भी देता हूँ चीजों को कवर अप करने का, तो मेरे ख्याल से इजिली हो जाएगा. ओके, एंड यस, प्लीज डू लेट मी नो. शायद चितरंजन वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार मेरे को थम्स अप कर दो ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सा बच्चा है जो वीडियो देख रहा है. ऐसा तो नहीं कि कोई असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर बैच का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, उसके लिए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा. आप सिर्फ गेट और ईएससी वालों को ये वीडियोस देखनी है. और हाँ, ये भी है, अगर आप हीट ट्रांसफर ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं तो अब आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा. ठीक है, अगर आप हीट ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे कहीं से भी किया हो, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट की वेटेज ऑलरेडी कम होती है सभी एग्जाम्स में. अभी के लिए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. ओके, सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू ब्रिंग अ चेंज. जैसे मान लो, suppose we push an object on the ground. So object is moving, the block is moving, the block will have some kinetic energy. So because of that kinetic energy, the position of the block will change. Hi Manesh, how are you? Because of the kinetic energy, the position of the block will change. So kinetic energy is bringing a change of position. And when the block will slide on the ground, the kinetic energy will convert into frictional heat. So there will be a transformation, and that frictional heat will be absorbed by the block, it will be absorbed by the ground and even dissipated to atmosphere. So there is a transfer, है ना. सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सा एग्जांपल है. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट है ग्राउंड पे, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के कारण ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा. So kinetic energy is bringing a change of position. But as the object will move, the energy will dissipate in form of heat. So there is a transformation. And from the object, some heat will be transferred to the ground. Some heat will be dissipated to atmosphere. So there will be a transfer also. I think this is a good definition. Similarly, due to chemical energy, chemical reactions happen. New molecules are generated, so there is a change. And during this chemical reaction, chemical energy converts into heat. Due to nuclear energy, nuclear reaction happens, new atoms are formed. So if it is fission, so a bigger atom will split into two new atoms. If it is fusion, so two atoms will combine to form a bigger atom, है ना. But during this reaction, so nuclear reaction is happening because of nuclear energy. And during this reaction, nuclear energy will convert into heat.
So energy is a capacity to bring a change, and during the change, energy transfers or transforms. So I think this is definitely a good definition और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा वर्ब का प्रॉब्लम हो गया. जो वर्ब आएगी वो आएगी ट्रांसफॉर्म्स, है ना. ट्रांसफॉर्म्स लिखेंगे आप यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म्स लिखेंगे. So anyone any doubt in this? Hi Manesh, how are you बेटे? तो मानस बेटा मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया है ना, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ न्यू कोर्स, दिस विल बी एन इम्प्रूव्ड वर्जन, देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस. फिर ये हम अपने चैनल पे वीडियो कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा. मगर अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया है किसी ने तो उसको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वैसे ही छोटा सब्जेक्ट है, वेटेज कम है ना. बट हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है तो मैं बहुत बढ़िया कराऊंगा, बेस्ट आपको मिलेगा, आपको बताइए. सो दिस वाज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म. व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इज थर्मल एनर्जी. Let's see how many of you will give me the correct definition of thermal energy. Anyone? I'm waiting for your response. Waiting for your response. Waiting for your response. What is thermal energy? What is thermal energy? What is thermal energy? कौन बताएगा? अच्छा, फर्स्ट टाइम है, बस ठीक है, फिर तो यहीं पे देखने का. ठीक है, रोज 40-45 मिनट्स, कभी कभी 70 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके बाद आप 20-25 मिनट लगा के रिवाइज कर सकते हो. बस उतना ही काफी है यहाँ पे मेरे साथ करने का, और खत्म हो जाएगा अपने आप ही ट्रांसफर. व्हाट इज थर्मल एनर्जी? सर, energy is stored in a substance in different forms. So this object will have some gravitational potential energy. This object can have some kinetic energy. This object will have some chemical energy, nuclear energy, है ना? So energy is stored in a substance in different forms. One of the form is thermal energy. So to write the definition of thermal energy, first of all, we need to see what is sensible energy. What is sensible energy? Sensible energy. So सच्ची बताऊं, ये जो सेंसिबल एनर्जी और लेटेंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, आई शुड नॉट से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो आपको हर बुक में दिखाई देगा, मगर जो टर्मिनोलॉजी है, दिस टर्मिनोलॉजी of sensible energy and latent energy you might not find in books like Leonard, Holman, Pikenak Sahab's book, Som Sahab's book, और सुखात्मे साहब्स बुक, बालाजी साहब्स बुक. ठीक है, ओनली इन सेंजल इट इज देयर. बट क्योंकि ये लैंग्वेज सिंपल है, इजी टू रिमेंबर है, इसलिए मैं ये लैंग्वेज यूज करता हूँ. सो व्हाट इज सेंसिबल एनर्जी? एज ऑफ नाउ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सो हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट? कितना काइनेटिक एनर्जी है? सब लोग बोलेंगे, टाइप करने की जरूरत नहीं है, बोलो. सर, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, है ना? काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. बट व्हाट यू विल डू, you will bring a microscope, electron microscope, and zoom into the molecules. So when you are looking at the molecules, you will observe that the molecules are vibrating at their position. So this solid object has 10 raised to power 24 molecules. So crore times crore times crore times 1000. This is the number of molecules in this object. Crore times crore times crore times 1000. This is the number of molecules in this object. So you will say, sir, if so many molecules are there and these molecules are vibrating, then why don't we feel that vibration? Because first of all, the amplitude of that vibration is negligible, and the amplitude of the vibration is of the order of molecular diameter, even less than that. So 1 angstrom, 10 raised to power minus 10 meters. And secondly, the frequency of the vibration is extremely high. Okay, Sridhar, beta, thank you for your kind, warm comments. Thank you so much, beta. So I think Sridhar is
मैं मतलब एक्चुअली मेरे को अब ध्यान नहीं है कि श्रीधर को मैंने कौन से बैच में पढ़ाया था, बट श्रीधर ऐसा है बेटा, अगर गेट के लिए हीट ट्रांसफर कर रहे हो, हीट ट्रांसफर नहीं किया है तो यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा था। सो in this solid object the molecules are moving, they are vibrating, so why we are not facing that vibration, we are feeling that vibration because when you look at the tube light, so you know even the light from the tube is fluctuating at 50 cycles per second. What is the frequency of alternating current in our homes? 50 हर्ट्ज है ना। हमारे घर में जो करंट आता है वो 50 साइकिल पर सेकंड से फ्लक्चुएट करता है, तो हमें ट्यूब से जो लाइट मिलेगी वो भी फ्लक्चुएट करेगी, मगर आप उस फ्लक्चुएशन को फील नहीं कर पाते क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व दिस वाइब्रेशन। बट यस, I can say, as of now, at macro level, at macro level, the object is not moving. The kinetic energy of the object is zero. But when I will zoom in and I will see the micro level, I will be able to see the motion of molecules. So at macro level, there is no kinetic energy in the object. But at micro level, there is some kinetic energy in the object. So that kinetic energy at micro level is sensible energy. तो आप क्या लिखोगे, जब सेंसिबल एनर्जी की डेफिनेशन लिखोगे तो सीधा बोलोगे द काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व्ड इन अ सब्सटेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल। द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व्ड इन अ सब्सटेंस एट माइक्रो लेवल। एट माइक्रो लेवल, कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि मेरी जो राइटिंग है वो मेरे पीछे छुप जाए तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना। इन अ सब्सटेंस एट माइक्रो लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। सो मेरे ख्याल से मैक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ये हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम में सीख चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा से अभी रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या होता है, आप लोग मेरे को बता सकते हो, मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। So the kinetic energy observed in a substance at micro level. So micro level means that is in the molecules. That is in the molecules. And by the way, you call this motion of molecules as a random thermal motion. इसको आप क्या बोलते हो? Random thermal motion बोलते हो. So suppose if I switch off the fan in this room, the air in the room will be at rest. So I will say at macro level, the air in the room is at rest. But if you will zoom in to see the molecules, you are also aware that the molecules of gas are free to move and they are moving in random directions. So in overall, the air is at rest because the fan is not rotating. But at molecular level, the molecules are moving. So there is some kinetic energy at molecular level that we will call as sensible energy. So I hope इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। अच्छा, किसी को पता है लेटेंट एनर्जी क्या होती है? Is anyone aware what is latent energy? Just hold on, I will remove my video ताकि आप लोग देख पाए मेरे पीछे क्या छुपा हुआ है। So आज से ना मैं एक हैबिट बनाऊंगा, ये जो क्लास नोट्स बनेंगे, इन क्लास नोट्स को मैं इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वहां पे अपलोड कर दिया करूंगा। So आप लोग बाद में कुछ घंटे के बाद, कुछ मिनट्स के बाद उस लिंक को डाउनलोड कर पाया करेंगे, ठीक है, ये मैं कोशिश करूंगा। So latent energy, कौन बताएगा what is latent energy? Sir, suppose there are two objects, m1 kg and m2 kg. So between two objects there will be a gravitational force gm1 m2 by r square, and there will be a gravitational potential energy also. I think it is minus gm1 m2 by r, है ना, ऐसे ही कुछ होता है। Similarly, there are two charges. So they will apply force of attraction or repulsion on each other. So there will be an associated electrical potential energy. So whenever two objects apply force of attraction or repulsion on each other, there is an associated potential energy. Similarly, when we are talking of molecules, in between the molecules, there are forces, there are
weak intermolecular forces of attraction and repulsion. So because of those forces, there is an associated potential energy. That potential energy is called latent energy. Quickly से repeat करूंगा. दो masses हैं, masses के बीच में gravitational force आएगा, यानी force of attraction आएगा, तो associated gravitational potential energy होगा. दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आएगा, तो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा. मैग्नेटिक पोल्स, एसोसिएटेड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली टू मॉलिक्यूल्स, associated molecular potential energy. So this potential energy at molecular level is latent energy. So you can write down potential energy observed at potential energy observed at potential energy observed at micro level. So I think I need to remove my video ताकि आप लोग देख पाए. Potential energy observed at micro level due to weak internal forces. At micro level due to weak intermolecular forces. Weak intermolecular forces. Weak intermolecular forces. So कहने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस ले लो, you take any substance at micro level, there will be a kinetic energy and potential energy in the substance. Sum of these two energies is thermal energy. इन्हीं दो एनर्जीज का जो सम है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं. सो थर्मल एनर्जी सेंसिबल एनर्जी प्लस लेटेंट एनर्जी. सेंसिबल एनर्जी प्लस लेटेंट एनर्जी. ठीक है, यही आपका थर्मल एनर्जी है. बस दैट्स इट. आपको थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन मिल गया. अब नेक्स्ट टर्म का डेफिनेशन आप लोग बताएंगे, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. टेम्परेचर बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, टेम्परेचर. अच्छा हाँ, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा. वहां पर तो बताना मुश्किल हो जाता है ना टेक्स्ट बुक ऐप पर. तो 2-3 दिन पहले मैंने ना इनका वीडियो देखा था. क्या नाम है अपना, संदीप माहेश्वरी सर का और खान सर का. तो इंटरव्यू था. वैसे ना मैं किसी का वीडियो नहीं देखता होता. और पहले क्या था कि गेट वाला, सॉरी गेट वाला तो अभी आया है, ये गेट अकेडमी और अन अकेडमी, पहले मैंने इन चैनल्स को ना सब्सक्राइब कर रखा था ताकि मुझे पता लगता रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं. बट मैंने फिर इन सबको हटा दिया क्योंकि आई फेल्ट कि मामला सही नहीं है, मज़ा नहीं आया, तो मैंने सबको हटा दिया. बट फ्यू डेज बैक आई वेंट टू समवन्स प्लेस और उन लोगों ने ना वीडियो लगाया हुआ था. तो यार मतलब मेरे को ना लगा कि सच में मतलब ना मोटिवेटिंग, जो जो मोटिवेटिंग बातें वो बता रहे थे, दैट वाज रियली गुड. कभी कभी ना इन लोगों की वीडियोस देखा करो. ये अपना क्या नाम है, सिविल के एक सर है मेडिजी वाले, है ना, उनका नाम है सिविल बींग्स, सागर डुडेजा सर. तो बहुत अच्छी नॉन टेक्निकल बातें बताते हैं, लाइक आपका डेली की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, पावर नैप कैसे लें, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं. इनकी वीडियोस देख सकते हो. खान सर की वीडियो देख सकते हो, वो भी अच्छा मोटिवेट करते हैं. संदीप महेश्वरी है, अच्छा मोटिवेट करते हैं. और एक ना टीचर है, आई नो दैट बॉय विल बिकम वेरी गुड. वैसे सच्ची बताऊं, जब मैं कोई बैच लॉन्च करता हूं तो मेडिजी वाले भी पूछते हैं कि प्रांशु ने लॉन्च कर दिया, तो टेक्निकली मेरा जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, मगर ये लड़का है जो मुझे लगता है आगे जाके बहुत बढ़िया करेगा. तो इस बंदे का नाम है मानस पटनायक. सो आई थिंक हिज नेम इज मानस पटनायक. मैं मेरे को याद नहीं अभी, बट आई सॉ हिज वीडियोस वंस. ये सोम, एमडी और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह पढ़ाते हैं. सो दीज पीपल विल डू गुड, दिस बॉय विल डू गुड. तो आप इनको, इसकी वीडियोस भी, इस बंदे की वीडियोस भी देख सकते हो टेक्निकल वीडियोस के लिए. मगर नॉन टेक्निकल वीडियोस के लिए तो ये सिविल बीइंग्स, संदीप माहेश्वरी, ये लोग बहुत बढ़िया गाइड करते हैं. इनफैक्ट जो मेडिजी के जो अपने टीचर है बीर सिंह साहब, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कई बारी. तो वो भी आप देख सकते हो कभी कभी मन करे, टाइम हो तो. वैसे नहीं, वेस्ट नहीं करना, ठीक है, वेस्ट नहीं करना टाइम. टाइम हो तो कभी कभी देख लिया करो. और फौजियों की वीडियोस देखा करो. स्पेशल फोर्स कमांडोज जो होते हैं ना, उनका जो लाइफ को देखने का नजरिया होता है वो अलग ही होता है. उनकी वीडियोस देखा करो, आपको पता लगेगा कि लाइफ में
मतलब कितनी सारी चीजें हैं, हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं शायद वो उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसा। सो व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, कौन बताएगा व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, एनीवन, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, है ना। सो जनरली वी से दैट टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जनरली हम ऐसा बोलते हैं, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो बेसिकली this definition means how you feel. The meaning of this definition is how you feel. Say for example, if I touch an object and I feel the object is cool, I will say the temperature of the object is lower than me. Actually, what will happen if I touch an object and I lose heat? So I will feel cool. So we will say the temperature of the object is lower than me. And if I touch an object and I feel hot because I am gaining heat, I will say the temperature of the object is greater than me. है ना? So this is how you define temperature. So we define temperature according to our feeling. इस definition का मतलब ही यही है कि how you feel. But frankly speaking, there is a mistake in this definition. This definition is not so good because let us suppose there are two objects in this room. One is a metallic object and one is a plastic object. You know what will happen? If I will touch this plastic object, I will feel cool. So I will say, array, the plastic object is cool. So temperature of plastic object is lower than me. But if I will touch this metallic object, I will feel even colder. So I will say the temperature of this metallic object is even more lower. So I have the maximum temperature. In the middle, we have the plastic body and then we have the metallic object. दिस इज व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू अवर फीलिंग, है ना। तो हमारी फीलिंग क्या कहती है, आपने प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को टच किया, आप कूल फील कर रहे हो, इसका मतलब प्लास्टिक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपसे कम है। बट आपने जब मेटलिक ऑब्जेक्ट को टच किया और भी ज्यादा कोल्ड फील करते हो, तो मेटलिक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और भी कम है। बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम विल बी, मैंने ना क्लास से पहले इंफ्रारेड थर्मामीटर रखा था, मगर प्रॉब्लम ये है पता नहीं बीवी ने सेल निकाल दिया, उसके सेल नहीं है। But you know what will happen? If I will take this thermometer and measure the temperature of this metallic object and plastic object, I will find that the two objects have the same temperature because they are in thermal equilibrium with this room. ठीक है? So even if I am feeling differently when I am touching the two objects, but actually the two objects have the same temperature. सो वाई आई एम फीलिंग डिफरेंटली, कौन बताएगा मैं डिफरेंटली क्यों फील कर रहा हूं, वाई आई एम फीलिंग डिफरेंटली, एनीवन, what is the reason that I am feeling different in different manner when I am touching the two objects? Sir, because what you feel depends upon how fast you are losing heat or gaining heat, how fast and obviously how much. ठीक है, what you feel depends upon how fast you are losing heat. So when we are talking of the two objects are at same temperature and less than me. So when I will touch the two objects, I will lose heat. But the thing is, a metallic object has a higher thermal diffusivity. So metallic object can extract heat from you at a faster rate. So you will feel more cold when you will touch the metallic object. Okay? So what is thermal diffusivity? We will come learn in the coming chapters, in chapter number 2. But as of now, you just remember our feeling, our degree of hotness or coldness not only depends upon the temperature of the object that we touch, it also depends upon the material properties of the object, because both temperature and material properties will decide how fast I'm losing or gaining heat
and that speed of losing or gaining heat, how fast I'm losing or gaining heat, will decide my feeling. It will decide the degree of hotness or coldness. एक बार ना यस नो कर दो, लाइक डिसलाइक कर दो, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पाया कि मैंने इंग्लिश में सही लैंग्वेज यूज की है या नहीं की है। ठीक है, थोड़ा सा ना इंग्लिश में मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी पता नहीं लगता कि ओवर रिपीटेशन कर दिया है या क्या। सो प्लीज जस्ट लेट मी नो वंस, एक बार मुझे बता दो whether you have understood or not. I can see that there are 3 people who are watching the video. So most probably Manas and Chitranjan are watching the video, क्योंकि एक मैं खुद भी अच्छा मैं नहीं देख रहा हूँ, मैंने मैंने बंद कर दिया है। तो एक बार मुझे बता दो, एक बार मुझे बता दो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, मानस एंड चित्रंजन एंड मे बी समवन एल्स इज देयर, वन मोर स्टूडेंट इज देयर, प्लीज डू लेट मी नो। समझ आ गया ना? समझ आ गया? ये डेफिनेशन सही नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपकी फीलिंग बताती है, और आपकी फीलिंग सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट की मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है। क्योंकि अगर मटेरियल प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी तो वो आपसे ज्यादा तेजी से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगी, तो आप ज्यादा कोल्ड फील करोगे। अच्छा, सो चित्रंजन हैव अंडरस्टूड, मानस हैव अंडरस्टूड, वेरी गुड। So the point is, the question is, then sir, what is the value of temperature? What is the definition of temperature? तो हम एक mathematical definition use करने वाले हैं। So the definition of temperature is very simple. It is thermal energy per molecule. It is the what should I say, intensity, क्या मैं word क्या use करूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। इंटेंसिटी मेजर यूज कर लेते हैं। इट इज द measure of measure of it is the measure of measure of thermal energy per molecule. It is the measure of thermal energy per molecule. Thermal energy per molecule. Measure of thermal energy per molecule. ठीक है, सो आइडिया बहुत सिंपल है। ये जो पूरा सब्सटेंस है, दिस कंप्लीट सब्सटेंस इज गोइंग टू हैव सम टोटल थर्मल एनर्जी। इफ द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस सब्सटेंस इज n, you multiply by Avogadro number, you get the total number of molecules. So thermal energy by total number of molecules. So measure of this is temperature. So temperature is not exactly equal to this, but it is proportional to this value. So this value is what we call as temperature. And I have a habit of denoting temperature by capital T. कुछ बुक्स में स्मॉल टी यूज करते हैं, कुछ बुक्स में थीटा यूज करते हैं, मगर मैं कैपिटल टी से टेम्परेचर को डिनोट करता हूँ। स्मॉल टी को मैं टाइम की तरह यूज करता हूँ, और थीटा को मैं टेम्परेचर एक्सेस की तरह यूज करता हूँ। ठीक है, सो मैं थ्रू आउट द कोर्स, चाहे डिग्री सेल्सियस हो, चाहे केल्विन हो, चाहे फारेनहाइट हो, मैं कैपिटल टी ही यूज करने वाला हूँ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर फॉर अस। Now here you have one useful point which will be helpful for you in day after tomorrow's class. एक important point है, ठीक है, एक important point है। Do you remember ideal gases? You might have learned ideal gases. So चितरंजन ने और मानस ने सिद्धार्थ सर के साथ पढ़ा होगा आइडियल गैस कॉन्सेप्ट, है ना? और आइडियल गैस कॉन्सेप्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आता है। So as per kinetic theory of gases, we assume that the molecules of the gas are perfect sphere. They are perfectly spherical balls, and when they collide with each other, there is elastic collision, and there is no internal force of intermolecular force of attraction or repulsion. यही होता है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो सफिशिएंटली लार्ज है, so intermolecular forces are negligible. We can ignore these intermolecular forces. So for ideal gas, what will be the associated potential energy? What will be the associated latent energy? What will be the associated latent energy? So I think the associated latent energy will be zero. So when we are talking of thermal energy, which is sensible energy plus latent energy, it is simply now sensible energy.
So when you are talking of an ideal gas, the thermal energy simply represents the kinetic energy of molecules. That is the sensible energy. Now, how do you write kinetic energy? We write kinetic energy in terms of velocity, है ना? So what we can do, we can write down the molecular velocity. So molecular velocity means the velocity with help of which the molecule is moving randomly. So we can write down the molecular velocity, which is equal to under root of 3 r bar T by m. 3 r bar T by m. ये देखो, what is temperature? Temperature is a measure of thermal energy per molecule, है ना? Temperature is a measure of thermal energy per molecule. But for ideal gas, thermal energy is simply the kinetic energy, that is velocity. So from there, this relation has come. वैसे मैं इस रिलेशन को डिराइव कर सकता हूँ, मगर वो डेरिवेशन की ना आपको जरूरत नहीं है. आई थिंक जब आप कॉलेजेस में सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप शायद ये डेरिवेशन करते भी हो, बट अभी के लिए इसको जरूरत नहीं है. हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखेंगे बिकॉज इस फॉर्मूला से थर्मल कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना. So all of you please check. I hope there is no doubt, and I think now we can move ahead. So this was the definition of temperature. Now I know you guys are getting bored. मुझे पता है आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो. One last term और आज के लिए मैं आप चलो आपको छोड़ दूंगा. वो हीट ट्रांसफर वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स हम कल भी कर लेंगे कंडक्शन से पहले, मगर एक लास्ट टर्म और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो वो लास्ट टर्म क्या है? हीट. लास्ट टर्म इज हीट. कौन बताएगा व्हाट इज हीट? फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज हीट? फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज हीट? सो डेली का थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, और बाकी टाइम आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे लगा सकते हो. सो 45 मिनट्स टू 70 मिनट्स मेरे साथ पढ़ लिया, 15-20 मिनट रिवाइज कर लिया, बस वो सफिशिएंट है. यहाँ पे तो होमवर्क भी कोई इतना ज्यादा नहीं होने वाला, सारा काम मैं क्लास में ही कराने वाला हूँ. हीट ट्रांसफर इज अ सिंपल सब्जेक्ट. सो व्हाट इज हीट? अच्छा, बोर नहीं हुए? चलो ठीक है, फिर ठीक है, फिर गुड. व्हाट इज हीट? मानस, चित्रंजन, बेटा व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? नहीं, बहुत सिंपल है. देखो, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. हाँ, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. वेरी गुड डेफिनेशन. सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. सपोज यू हैव 2 पॉइंट्स इन स्पेस. ये 2 पॉइंट्स हैं, एंड मे बी there is a difference of electric potential between them. So there is a difference of intensive property between 2 points. So whenever there is a difference of intensive properties, there is some sort of associated flow from high potential to low potential. And since we are talking of electric potential, there will be a flow of charge. अब आप मुझे बोलोगे सर फिर एक काम करते हैं, लेट्स टेक 2 wires. We will connect one wire with the positive terminal of the socket and the other wire with the negative terminal of the socket. So one wire is at higher potential, the other wire is at lower potential. So as per you, the current should flow. But where is the current? There is no current here. Because this is the law of nature that between 2 points, if there is a difference of intensive property, there will be an associated flow from high potential to low potential, and also the intervening space or medium is going to offer some resistance to flow. The intervening space or medium is going to try to oppose the flow. Now actually the air between the two terminals, it has such a high resistance that even if there is a flow of charge, that flow of charge we cannot measure physically. For us, that flow of charge is physically insignificant. So depending upon the resistance, if the resistance is high, the flow will be negligible. And if the resistance is low, the flow will be significant. So when there is a difference of electric potential, there is flow of charge, which you call as current. When there is a difference of energy head,
there is a flow of fluid which you write down by flow rate. And similarly, when there is a difference of temperature, similarly, when there is a difference of temperature, then there is a flow of thermal energy from high temperature to low temperature. Okay, so this is the law of nature कि भैया अगर आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, उन दो पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, सो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी मूव करेगी. एंड हाउ दिस थर्मल एनर्जी इज मूविंग, that we will learn tomorrow. So depending upon how thermal energy is moving, we will use the term conduction, convection or thermal radiation. And when the thermal energy is moving, at that time we call the thermal energy as heat. This moving thermal energy, propagating thermal energy is called as heat. So heat is nothing but propagating thermal energy. Propagating means moving. Propagating, तो propagating के साथ आप लिख सकते हो moving, propagating thermal energy. So ये thermal energy क्यों move करती है कल हम देखेंगे. और depending upon why it is moving, you call it as heat conduction, heat convection or thermal radiation. Propagating thermal energy due to spatial temperature difference. Due to spatial temperature difference. सर व्हाट इज स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस, वैसे ही थोड़ी सी हाई फाई लैंग्वेज लिखने के लिए बोल दिया. स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस सिंपल सा है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस. ठीक है, सिंपल है, ऐसी हाई फाई लैंग्वेज के लिए थोड़ा ऐसे बोल दिया. ड्यू टू स्पेशल टेम्परेचर डिफरेंस, difference of temperature between two points in space. Spatial temperature difference. Spatial temperature difference. ठीक है. So जैसे say for example when we are talking of sun, तो आपको पता है ना कि inside the sun nuclear fusion reaction is going on, and because of that nuclear fusion reaction the temperature in the middle core of the sun is like 15 million Kelvin, and the temperature at the surface of the sun is 5778 Kelvin. Whereas if I talk of earth, the average surface temperature of earth is near about 15 degrees Celsius. Yes, you can convert it into Kelvin. So there is a difference of temperature between two points in space. शायद मुझे मेरा वीडियो हटाना पड़ेगा, है ना. ओके, हटा देता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. वैसे कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, सिर्फ अर्थ लिखा है. So there is a difference of temperature between two points in space. So what will happen? The thermal energy of the sun will go from high temperature to low temperature. So when it was part of sun, we will call it as thermal energy of sun. When it is absorbed by earth, so when it will be absorbed by earth, there will be atmospheric motion, ocean motion, there will be formation of food, formation of clouds, है ना? Then it will be called as thermal energy of earth. But when it is moving from sun to earth, when it is propagating through vacuum, then we will call this energy as heat. ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब थर्मल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है तब हम उसको हीट कहते हैं. बस दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हीट इज. तो जब भी आप ये टर्म यूज करते हो ना, हीट ट्रांसफर, whenever you use this term heat transfer, actually there is no need of putting the word transfer. ये एक ऑब्सोलीट वर्ड है. ये एक ऑब्सोलीट वर्ड है. क्यों? क्योंकि हीट इज इटसेल्फ द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी. सो हीट ट्रांसफर कोई मतलब नहीं बनता. बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत साल पहले हम सोचते थे कि हीट एक फ्लूइड होता है. उस फ्लूइड को किसी और ऑब्जेक्ट में ऐड कर दो तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो हम बोलते थे हीट इज अ फ्लूइड विच व्हेन ट्रांसफर्ड. तब से ये टर्म चली आ रही है हीट ट्रांसफर. मगर धीरे धीरे हीट की डेफिनेशन इंप्रूव हुई तो पता लगा कि हीट इज इटसेल्फ थर्मल एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड. तो अलग से ट्रांसफर लगाने की जरूरत नहीं है. तो एक रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है, मगर हम सब्जेक्ट में इसी तरह यूज करेंगे हीट ट्रांसफर. ठीक है. So guys, these are some important terms which I wanted to discuss with you. Why we have written this definition? Because we are going to talk about heat. So you should know what the definition of heat is.
कल हम एक काम करेंगे, स्टार्टिंग में देखेंगे दैट when we start thermodynamics, we learn the definition of heat there. So we can calculate heat by mc delta t, or we can calculate heat by mass into latent heat. So if we can calculate heat in that subject, why there is a need of additional subject? What are the objectives of this subject? And yes, we will start discussing heat conduction also. Okay, so that will be all for today. कोई डाउट पूछना है पूछ लो, और मैं एक काम करता हूँ, ये जो नोट्स हैं इनको सेव करके देखता हूँ कि इनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ तो आप इसको फिर डाउनलोड कर पाएंगे। बट ध्यान रखना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, वही बच्चे आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे जो अपने नोट्स खुद बनाएंगे। ठीक है, सो एनीवन, कोई भी डाउट हो, चितरंजन, मानस, बेटा कुछ भी डाउट पूछना हो पूछ लो। आज का काम तो बहुत हल्का था, बट ठीक है, आज पहला दिन था हीट ट्रांसफर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोगों ने क्या किया, पहले तो इंट्रोडक्शन चैप्टर के कंटेंट लिख लिए, अपना सिलेबस लिख लिया, और उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी की डेफिनेशन देखी कि एनर्जी और वर्क को गोल गोल घुमाया हुआ है, आप एनर्जी की ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो। फिर थर्मल एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, और उसके बाद लास्ट में हीट देखा। ठीक है, तो आज हमने यही काम किया है, थोड़ा सा काम किया है बट चलो ठीक है। सर कैन यू टेल व्हेन दिस एचटी सिलेबस विल बी कंप्लीटेड? देखो ऐसा है, मे बी आई थिंक वी वुड नीड अराउंड 45 आवर्स टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, 45 to 50 आवर्स। तो डेली अगर हम 1 घंटा करते हैं तो हमें 50 दिन चाहिए होंगे, है ना। सो आप बस आप ना एक ही चीज ध्यान रखो कि शाम को 7 से 8:30 बजे तक का टाइम जो है वो मेरे लिए रखो। तो 7 से 8 मेरे साथ पढ़ लिया और आधा घंटा रिवाइज कर लिया, और अपने बाकी टाइम जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स में लगाया। हीट ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अलग से होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं सर, ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट लटकता रहेगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं छोटा सब्जेक्ट है तो मैं मे बी हफ्ते में या 10 दिन में खत्म कर दूं। तो फिर आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, जब कंप्लीट कंडक्शन चैप्टर यहाँ पे आ जाए तो कंप्लीट कंडक्शन चैप्टर कर लिया, जब कंप्लीट थर्मल रेडिएशन आ जाए तो थर्मल रेडिएशन कर लिया। अब बट मेरे ख्याल से अगर लाइव भी आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो मतलब आप ना अपनी अपनी उसके हिसाब से देखो, अपने क्या कहते हैं, ईज के हिसाब से देखो, कंफर्ट के हिसाब से देखो। हाँ, अरे यार न्यूमेरिकल्स के बिना कैसे काम चलेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं डिस्कस करेंगे तो कैसे काम चलेगा, पता है। इस बार तो मेरे पास ये वाला न्यूमेरिकल भी है। सो मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है। क्या न्यूमेरिकल है, सन से रेडिएशन मिल रहा है। तो पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि उस रेडिएशन में कितना लाइट है, ठीक है, और फिर वो लाइट का कितना हिस्सा अर्थ पे फॉल कर रहा है, और एक सोलर कुकर लेंगे, उस सोलर कुकर पे कितना लाइट फॉल कर रहा है, उस लाइट में से कितना अमाउंट ट्रांसमिट होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फंक्शन भी लगेगा, व्यू फैक्टर भी लगेगा, और मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिसिविटी भी लगेगी। तो आप इंजॉय करो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फंक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फंक्शन, मोनोक्रोमेटिक एमिसिविटी, व्यू फैक्टर एंड मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिसिविटी, तो सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। इस तरह का न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो फायदा ही होगा। ठीक है, तो ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बिना यार कहाँ कुछ होगा, न्यूमेरिकल्स के बिना कुछ नहीं होगा। बट अभी स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। पहले जो आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में आएंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज्यादा है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अभी के लिए चलते हैं। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर देना। मे बी आई थिंक शायद मुझे हेल्प मिले, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके शायद हेल्प मिले। ठीक है, फिर आई विल सी यू टुमारो, बाय, सेम टाइम। मैंने नेक्स्ट 6 क्लासेस का शेड्यूल जनरेट कर दिया है, आप लोग वीडियोस चेकआउट कर सकते हो कि कब कब वीडियोस हम निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी ये क्लास जो है कंटिन्यूअसली चलेगी फॉर एटलीस्ट अ मंथ। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट बिना ब्रेक के कंडक्शन और थर्मल रेडिएशन कर लें। उसके बाद दरअसल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखो ऐसा है, अ, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना, तो अगर एक मैं ये वाला टॉपिक ले लूँ इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का, और एक हीट कंडक्शन टॉपिक ले लूँ, तो आप देखोगे लगभग 40% क्वेश्चन इधर से आते हैं। फिर उसके बाद लगभग कह लो 25% क्वेश्चन जो है थर्मल रेडिएशन के आते हैं, और 15%
क्वेश्चन जो है हीट एक्सचेंजर के आते हैं और 10% क्वेश्चन जो है हीट कन्वेक्शन के आते हैं। ऐसा सीन है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना हीट कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी और थर्मल रेडिएशन से आ रहे हैं। सो अगर हम थर्मल रेडिएशन तक कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और हीट एक्सचेंजर एक छोटा टॉपिक है मगर इम्पोर्टेंट है, तो वो कर लेंगे। फिर चाहे हम थोड़े दिन का ब्रेक लेके, 3-4 दिन का ब्रेक लेके हीट कन्वेक्शन भी कंटिन्यू कर लेंगे। बट कोशिश करना है कि हीट कंडक्शन तक कोई ब्रेक ना हो। अगर कंडक्शन के बाद ब्रेक लेना भी पड़े तो 2 दिन का ब्रेक लेके थर्मल रेडिएशन स्टार्ट कर दें, ऐसा। तो डेली बेसिस पे 7 o'clock वी विल स्टडी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 5 days a week। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय बाय, आई एम लीविंग नाउ।